मुझे और बांग्लादेशी क्लिप्स देखनी है। असलियत में मुझे बांग्लादेश के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था। इंडिया के बारे में फर्क कहानी है क्योंकि वो वेस्टर्न मीडिया में बहुत रिप्रेजेंट होता है और बॉलीवुड इतनी बड़ी है, तो इंडिया के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है इस वीडियो से पहले। अगर आप मेरे जैसे हैं और आपको भी बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं आपकी होस्ट हूँ एमन हसन और वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। क्रिसमस हॉलीडेज आने वाली है तो आप लोगों के पास और भी फ्री टाइम होगा, तो आप हमारे वीडियोस क्यों नहीं देखते हैं? But without further ado, this is the top 10 differences between India and Bangladesh. 10 पे है उनके फर्क ज़बानें। बांग्लादेश में बंगाली या बांग्ला बोला जाता है। 90% of लोग बांग्ला बोलते हैं और बांग्ला उनकी ऑफिशियल ज़बान है, मगर अंग्रेजी इस्तेमाल होती है उनकी सेकंड ज़बान के लिए ऑफिशियल लीगल पर्पसेस की वजह से। আমি কি আপনাদের সাথে কিছু কথা বলতে পারি? Sorry, you don't speak না আমি বুঝতেছি না। আপনারা বুঝতেছেন না আমি কি বলতেছি? बांग्ला में बहुत इस्लामिक इन्फ्लुएंस है, तो काफी लफ्ज अरबी और उर्दू से मिलते जुलते हैं, लाइक अस्सलाम वालेकुम, फॉर हेलो, खुदाफिज फॉर बाय, एक्सेट्रा। मगर वेस्ट बांग्लादेश में ज्यादा हिंदी और इंडियन इन्फ्लुएंसेस है क्योंकि इंडियन बॉर्डर वहाँ पर है। बांग्लादेश में काफी ज्यादा ज़बानें बोली जाती हैं जैसे चिटागोनियन, सलहेटी, चाकमा और रंगपुरी, और ये बस 4 ज़बानें हैं इस पूरी लिस्ट में। एंड फॉर ऑल माय बंगालीज, आई नो आई प्रोबब्ली प्रोनाउंस दोस रॉन्ग, आई एम सॉरी, आई ट्राइड but I probably failed. इसके अलावा उनके पास 33 और ज़बानें हैं और ज्यादातर माइनॉरिटीज ये बोलती हैं। इंडिया में भी बहुत लोग बंगाली भी बोलते हैं, तकरीबन 242 million people. And to put that in perspective for you, 242 million people is more than the population of countries like Pakistan, Brazil and Indonesia. लेकिन इंडिया में उनकी मेन ज़बान हिंदी है और उनके पास भी इतने सारे ज़बानें हैं जो मैंने पाकिस्तान और इंडिया की वीडियो में भी पहले मेंशन किया है, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और गुजराती भी। 9 पर है उनका खाना। मैंने पाकिस्तान और इंडिया की वीडियो में कहा कि इंडियन खाना ज्यादा तक वेजिटेरियन है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा तक हिंदू है। सब लोग वेजिटेरियन नहीं है और अगर एक बंदा हिंदू हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको वेजिटेरियन होना जरूरी है। मिथ बस्टेड। तो इंडिया में बहुत चने इस्तेमाल होते हैं, आलू, ओकरा और थोड़ा सा बीफ भी। बांग्लादेश में सब कुछ चलता है, मगर सबसे मशहूर है सी फूड। बंगालीज को सी फूड से बहुत प्यार है। There's literally a famous proverb which is Mache Bhate Bengali, and I'm pretty sure I said that wrong too, but it means Bengali by fish and rice. उनके सबसे आम ingredients है मछलियाँ के सर, every sort of seafood, mustard in any form, oil, seeds, paste, and obviously all the प्याज you can think of. Bangladeshis ये सब खाते हैं चावल या रोटी या पराठा के साथ या लूची, जो मैंने पहले कभी नहीं सुना। लूची पूरी की तरह होती है लेकिन थोड़ी और flat. And Bengalis usually stuff mashed peas into it and it's called karai shatar kochuri. मैंने कीमा के पराठे ट्राई किए हैं, आलू के पराठे ट्राई किए हैं, मीठे पराठे, मगर मैंने ये कभी नहीं ट्राई किए और अब मैंने करना ही करना है। For any Bangladeshis watching, if you'd like to send me some karai shatar kochuri my way, that'd be great. आज पे है पॉपुलेशन। इस साल बांग्लादेश की पॉपुलेशन तकरीबन 169 मिलियन है और इंडिया की पॉपुलेशन 1.36 बिलियन है। तो आप लोग तो देख सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 8 गुना ज्यादा है। But again, obviously there was going to be a massive difference क्योंकि अगर हम इन दोनों मुल्कों को देखें, इंडिया का साइज बहुत बड़ा है compared to बांग्लादेश, तो इनके population sizes भी justified है। Whenever I read about populations, like I recognize it's a big number, but my mind can't even fathom or envision that many people in one place. But then I start having like an existential crisis because I'm like, wow, I'm one person in like a bajillion people out there. Anyone else? 7 पे है the size of both countries. Bangladesh's area as a country is around about 147,000 kilometers squared and India is 3.3 million kilometers squared. तो अगर हम compare करें US के साथ, अगर हम पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी को मिला दे, बांग्लादेश उससे थोड़ा सा बड़ा है और आयोवा से थोड़ा सा छोटा। India on the other hand is slightly more than a third of the US. Admittedly, I personally have no idea how big Pennsylvania, New Jersey or Iowa are, but hopefully that makes sense to somebody watching out there. बांग्लादेश की बॉर्डर पे बर्मा और हिंदुस्तान लगता है और इंडिया की बॉर्डर पे बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, बर्मा और नेपाल लगते हैं। Fun fact of the day for you. 6 पे है religion. इंडिया में 79.8% of लोग हिंदू है, 14.2% मुसलमान है और Christians, Sikhs और other minorities make up the remaining 5%. बांग्लादेश में opposite scene है। वहाँ पर 89.1% of लोग मुसलमान है, 10% हिंदू है और आखिरी 0.9% दूसरी religions
के हैं। अब वक्त आ गया है छोटा हिस्ट्री लेसन का। पहले जमाने में बांग्लादेश वेस्ट पाकिस्तान होता था और जब पाकिस्तान बना 1947 में इंडिया से अलग होकर it was the only country formed on the basis of religion. So it makes sense that West Pakistan, which is current day Bangladesh, is predominantly Muslim. See, it's just quick maths, 1 + 1. 5 पे है झंडे। डिफरेंसेस ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है क्योंकि मुल्कों असलियत में एक जैसे हैं। बांग्लादेश का फ्लैग हरा है और मिडिल में एक लाल सा डिस्क है। The red disc represents the sun rising over Bengal और वो लोगों का खून भी represent करता है जिन्होंने आजादी के लिए लड़ा था। और हरा रंग बांग्लादेशी ग्रीनरी और खूबसूरती को represent करता है। हिंदुस्तानी फ्लैग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फ्लैग के 3 स्ट्राइप्स हैं और मिडिल में एक नीला व्हील। तो ये सब क्या represent करता है? हरा स्ट्राइप chivalry and faith को represent करता है। ऑरेंज स्ट्राइप sacrifice and courage को represent करता है और सफेद स्ट्राइप पीस और ट्रूथ को represent करता है। व्हील का नाम है अशोका चक्र और वो law of dharma है। It just means that an Indian's main life principles should be truth and virtue, which is a that's fair. It should be everyone's main principles really. 4 पे है ट्रांसपोर्ट। इंडिया तो बांग्लादेश से काफी बड़ा देश है तो पब्लिक के लिए बहुत फर्क किस्म के ट्रांसपोर्ट अल्टरनेटिव्स हैं। भारत में 68,525 किलोमीटर की रेलवे लाइंस है और 4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर की सड़कें हैं और 350 से भी ऊपर एयरपोर्ट्स। वाओ, मैं तो काफी शॉक में हूँ अभी, मगर खुशी से because that's a very hefty number. That's impressive. बांग्लादेश में खाली 2,460 किलोमीटर स्क्वायर की रेलवेज हैं और 20,000 किलोमीटर स्क्वायर की सड़कें और बस 18 एयरपोर्ट्स। मगर जैसे मैंने पहले कहा, बांग्लादेश भारत से बहुत छोटा है। बांग्लादेश के आम लोग ज्यादातर मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं सफर के लिए, या पैदल चलते हैं या बस लेते हैं और इसलिए 80% सड़कें बांग्लादेश में बस रूट्स हैं। Wow, imagine all the congestion that gets eliminated from all these people traveling in buses and not cars. 3 पे है उनके currencies. Now most South Asian countries function on country name rupees. जैसे इंडिया में वो इंडियन रुपीज इस्तेमाल करते हैं मगर बांग्लादेश में वो बांग्लादेशी ताका इस्तेमाल करते हैं। 63 बांग्लादेशी ताकाज एक कैनेडियन डॉलर बनता है या 83 ताकाज एक यूएस डॉलर बनता है। अगले तरफ पे 54 इंडियन रुपीज एक कैनेडियन डॉलर बनता है या 71 रुपए एक यूएस डॉलर बनता है। So in case any of our viewers are wondering what the exchange rates were, I just did the work for you, so you're welcome. 2 पर है celebrations। तो बांग्लादेश की मेजर सेलिब्रेशंस इस्लामिक होती है तो वो ईद अल फितर और ईद अल अदा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनका बंगाली कैलेंडर भी होता है और उसके अंदर इनके काफी फर्क सेलिब्रेशंस होते हैं जैसे पोला बोईशाख। ये बंगाली कैलेंडर का सबसे पहला दिन होता है और ये दिन क्रॉप सीजन की शुरुआत मार्क करती है। इस दिन पे लोग अपना घर साफ सुफ करते हैं और अपने दोस्त और रिश्तेदारों से मिलते हैं और शुगल लगाते हैं। There are festivities all over town and many products get sold as well like handicrafts etc. And a version of this is actually celebrated in India as well. बांग्लादेश में नबाना भी सेलिब्रेट करते हैं जो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इंडिया में भी ढेर सारे सेलिब्रेशंस है। दिवाली होती है, ईद अल फितर और अदा भी होता है, गणेश के फेस्टिवल्स होते हैं, होली और बहुत और सारे हैं जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकती हूँ। मेरी बात बस मान लो, बहुत सारे सेलिब्रेशंस है। जब मैं रिसर्च करी थी विकिपीडिया पेज पे 81 सेलिब्रेशंस की लिस्ट थी। 81. How do people even remember that many celebrations? I can barely remember people's birthdays. एक पे है ड्रग्स और मैं दवाइयों के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। I thought I'd include a more obscure difference rather than something numerical, so here goes nothing. बांग्लादेश में illegal drugs की मार्केट नहीं है मगर बांग्लादेश को सबसे बड़ा ट्रांजिट देश माना जाता है। ड्रग्स बनते हैं उनके पड़ोसी देश में और बांग्लादेश से होकर अपने आखिरी मुकाम में पहुँचते हैं। So innocent by fault but guilty by association. दूसरे ओर पे है इंडिया जो दुनिया के सबसे बड़ा ओपियम प्रोड्यूसर है फार्मास्यूटिकल मार्केट का। मगर अफसोस की बात ये है कि काफी ओपियम फिर एंटर होता है इंटरनेशनल ड्रग मार्केट में। इंडिया 2 A क्लास ड्रग्स मेथोकेटामीन को भी बहुत प्रोड्यूस करता है। So hopefully there's some facts you didn't know about all the drugs in the world. Or guys, that's all for today's video. असलियत में ये वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है other than size and population, मगर कल्चर में और आम रहने में दोनों मुल्क थोड़े से एक जैसे हैं। मगर ये कहने के बाद मुझे बांग्लादेश के बारे में बहुत कुछ पता चला। मेरे पास 2 बंगाली दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। Thanks a lot guys. और अब वक्त आ गया है guys for some
some comment. Dark Wolf says, yay, Pakistan, my country, I love Pakistan, please do UAE. Fun fact, I was actually born and raised in Dubai, but I actually never heard of any urban legends, but I also wasn't looking out for them, so I will definitely research and get back to you on that, and maybe it'll be a video. Romeo Lucifer says, one of the best video, at least काफी कुछ जानने को मिला DP के बारे में, thanks to you, Ayman, and inshallah you will achieve your goal one day and be like DP. Yes, I really hope I'll be like DP one day, but I'm glad you guys are enjoying that series about all the facts about celebrities that you didn't know. I like that. Suggest more that you guys want to see. And Deal of Wisdom says, haha, first comment, this video was released when I started eating food. I feel like you always need a good meal before you start a YouTube video. I mean, that's the way, that's the ritual, that's how it's done. Last but not least, Sunny Khan says, Deepu, she's the prettiest and classy too. Now I love her more as she has made a smart move by marrying Ranveer. Have you seen the pictures on Instagram? The wedding was lovely. But other than that, I love reading you guys' comments. May I aapki host you, Ayman Hassan, and I'll see you next time. Khuda Hafiz.